अस्सलाम क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ टीचर। आज हम इसका सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 4 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया गया, ज़मीन और उसकी तहों के बारे में बताया गया। अ लैंड फॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, प्लेन एंड ऑल आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। The earth consists of four layers. The outermost layer of earth is called earth crust. The crust is made up of long, large moving piece of rock called tectonic plates, which are constantly moving. The point where two plates meet is called boundary, and it is here that earthquake and volcanoes are most likely to occur. An earthquake can also cause a tsunami. A tsunami is a huge tidal wave by an earthquake under the ocean. Over the time, continuous shift of these plates alters existing landform and creates new ones. Did you know that 200 million years ago, the seven continents of the world were joined together? Over the million of years, they have gradually drifted. पहले पैराग्राफ में हमें अर्थ की चार लेयर्स के बारे में बताया गया। इसकी चार तहें होती हैं। जो सबसे ऊपरी तह होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट बहुत बड़े पत्थर के पीसों से बनी होती है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो कि हर वक्त घूम रही होती हैं। इसकी वजह से जहाँ पर दो प्लेट्स मिलती हैं उसको बाउंड्रीज कहते हैं, जिसकी वजह से वोल्केनोज और ज़लज़ले आते हैं। अब ज़लज़ले की वजह से सुनामी आती है। सुनामी एक बहुत बड़ा टाइडल होता है, लहर होती है पानी की समुद्र में, जो कि ज़मीन ओशन के अंदर और जो उसके ज़लज़ले की वजह से आती है। Of water and wind also create landforms. In this lesson, you will learn about some major landform of Pakistan. Physical region of Pakistan. There are two separate physical regions of Pakistan. These are the Western Highland, the Indus River Plain. These regions are quite different from each other. They have landforms, climate, vegetation. These differences have effects on the lives of people. Western Highlands are situated in the west and north of the country. They begin near the Makran coast in the south and cover most of Balochistan. They continue into Khyber Pakhtunkhwa and northern part of Punjab. The extreme north of Pakistan is a mountainous range. The ranges are the Himalayas, the Karakoram and the Hindu Kush. The Himalayas. The southern range in Rawalpindi district in Sivalkis or sub-Himalayas. These mountains rise to the height of 600 to 1200 meters above sea level. The lesser Himalayas fourth north are between 1800 and 600 meters high. In the mountains, there are some beautiful places visit such as Mari, Nathia Gali and Ghoda Gali. Some of the mountains are in the north form part of Great Himalayas, which are over 4600 meters high. These mountains with glacier and snowy peaks are in Kohistan district. Nanga Parbat, the Himalayan range, is the second highest peak of Pakistan.